Hi friends and dear students, I am Shalu Sharma. Welcome you all to my YouTube channel SS Pediatrics. I hope you all were doing well and staying safe. आज के लेक्चर में जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वो है अनेमिया। अनेमिया क्या है? अनेमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल जो है वो कम हो जाता है। और हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग मेटालोप्रोटीन है जो नॉर्मली रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट होता है, खून में प्रेजेंट होता है। और अगर हीमोग्लोबिन का लेवल जो है वो नॉर्मल से कम हो जाए, नियर अबाउट 7 to 8 mg पर डेसीलीटर से कम हो जाता है, तो उस एक सिचुएशन में हमारी जो रेड ब्लड सेल्स हैं, मीन्स हमारे जो खून में हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रही थी वो अभी थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम हो रहा है ब्लड में। तो अभी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास कम हीमोग्लोबिन है, तो जिसकी वजह से बॉडी के जो डिफरेंट सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन कम मिल रही है, उनको ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन कम सप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से क्या है, बॉडी की समवेयर फिजियोलॉजी खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करती है और सारा जो वर्कलोड है वो हार्ट के ऊपर चला जाता है, क्योंकि हार्ट पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है। तो अभी क्या है, देयर इज़ अ कंडीशन विच इज़ अराइज टैकीकार्डिया एंड इंक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट हो जाता है, क्योंकि उसको पूरी बॉडी को ऑक्सीजन रिच ब्लड को सप्लाई करना है। बट स्टार्टिंग इनिशियल स्टेजेस में तो वो कोप अप करने की कोशिश करते हैं, कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज करने की कोशिश करता है हार्ट। बट अगर ये कंडीशन को हम टाइम से उसमें पेशेंट का हीमोग्लोबिन लेवल को इंक्रीज ना कर पाए तो एट लास्ट हमारे पास वो बॉडी इतना ज़्यादा टाइम तक एडजस्ट नहीं कर पाएगी बॉडी की फिजियोलॉजी, एंड देयर मे बी द चांसेस ऑफ कार्डियक फेलियर। आज के लेक्चर में मैं आपको अनीमिया इन डिटेल में बताऊंगी। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशन आता है उसमें, डिफरेंट टाइप्स हमारे पास आएंगी। यही सब मैं आज के लेक्चर में आपको बताऊंगी। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक अनीमिया। Start with the topic anemia. Anemia, as I already explained you in my introduction, that anemia is defined as a condition where hemoglobin level is below in our blood. So that condition is to be considered as a anemia, and as a result of reduced circulating hemoglobin, oxygen carrying capacity of the blood reduces. Continuing with that, start with the anatomy of blood. Blood is the river of life, and it is true. And blood constituent the human body, and it forms the circulatory system, because just क्योंकि blood के थ्रू जो है वो जितने भी हमारी बॉडी में जैसे न्यूट्रिएंट्स हैं या न्यूट्रिएंट कंपोनेंट्स हैं या वेस्ट है, जो भी चीज़ें हैं वो सर्कुलेट होकर बॉडी में या तो सेल्स तक पहुंचाई जाती हैं या सेल्स से लेके उनको बॉडी के थ्रू एलिमिनेट किया जाता है। एंड blood occupies 8% of total body weight and has an average density of about 1060 kg per meter cube. An intricate network of veins and arteries distributes the blood throughout the body. Circulating fluid providing the body with the nutrition, oxygen and waste removal, as I told you, and the average person has about 5 liters or more than a gallon of blood. Next are the components of blood. Includes red blood cells, white blood cells, platelets, proteins, and the function of this: blood supplies oxygen and nutrients, as I told you, and remove the waste product like urea, lactic acid and carbon dioxide from our body. Provides immunity to the individual and helps in the transportation of hormones to throughout the body and aids in the blood clotting, regulates and maintains the normal temperature of the body, maintain pH balance inside the body, and the pH of the blood lies in the range of 7.35 to 7.45 and help in homeostasis. Anemia, the word origin and the history for the anemia. In 1824, from French medical term, modern Latin from Greek anemia, lack of blood, from anemos, bloodless, or from and without. So this on and whole जो वर्ड हमारे पास अनीमिया निकल के आता है, ये अनीमिया मीन्स लैक ऑफ ब्लड, फ्रॉम एनेमियोस। एनेमियोस वर्ड का मीनिंग है ब्लड लेस, कम है, सो मीन्स विदाउट। सो अगर बॉडी में ब्लड कम है और विदाउट दैट, सो वहाँ से ये वर्ड निकल के आता है अनीमिया। देन डेफिनेशन: अनीमिया इज डिफाइंड एज द रिडक्शन in the red blood cells or in
concentration of hemoglobin below the lower limit of the normal range for the age and the sex of the individual. So जो भी एक नॉर्मल रेंज मैं भी आपको आगे बताऊंगी, नॉर्मल रेंज जो स्टैंडर्डाइज जो सेट किया जाता है कि इतना लेवल जो है वो होना चाहिए हीमोग्लोबिन का ब्लड में, सो अगर उससे कम होता है देन दैट इज़ नोन एज अनेमिया. सो ये यहाँ पे है नॉर्मल हीमोग्लोबिन वैल्यू शो की गई हैं इस चार्ट में. बर्थ, start from the birth with the age group and then female, then male, and normal values and mean values. Then classification of anemia on the basis of morphology and etiology. Start with the classification which is based on morphology. First is microcytic anemia, then normocytic anemia and macrocytic anemia. First is microcytic anemia. In this, the abnormally small cells are present in the iron deficiency anemia and the certain non-iron deficiency anemia. So यहाँ पे small, abnormally small size होता है, and in case of normocytic RBCs का normal size होगा, shape होगा, but anemia occurs due to the blood loss या hemolysis और bone marrow failure की वजह से. And in case of macrocytic anemia, RBCs का normal size and shape होगा, and it is usually due to the vitamin B12 और folic acid deficiency की वजह से. On the basis of hemoglobin content in RBCs, anemia may be hypochromic or normochromic. In case of hypochromic, abnormally decreased hemoglobin content, and in case of normochromic, normal hemoglobin content. Next, the classification of anemia, which is based on etiology: anemia due to blood loss, anemia due to impaired cell production, or anemia due to increased cell destruction. First, start with the first, anemia due to blood loss. अगर blood loss होता है तो उसकी जो types हैं, acute post hemorrhagic anemia and chronic post hemorrhagic anemia. Then anemia due to impaired cell production means cell जो हीमोग्लोबिन का जो प्रोडक्शन रेट है वही कम हो गया है. सो डेफिशिएंसी ऑफ सब्सटेंसेस विच आर एसेंशियल फॉर द इराइथ्रोपोइसिस, दैट इज iron deficiency anemia and vitamin B12 and folate deficiency. And then disturbance of proliferation and differentiation of stem cells, so that come under the aplastic anemia भी हो सकता है जिसकी वजह से ये चीज़ राइज हो रही है, and aplasia of the pure red cells. Then disturbance of bone marrow function or due to systemic disease, so that anemia due to infection or anemia in case of renal disease, liver disease, disseminated malignancy, or in case of endocrinopathies. Anemia due to bone marrow dysfunction in case of leukemia, myelosclerosis, multiple myeloma, and in case of congenital anemia, sickle cell anemia, and the congenital dyserythropoietic defect anemia. Then anemia due to increased cell destruction. सेल डिस्ट्रक्शन की वजह से अगर अनेमिया हो रहा है देन वो कौन कौन सी इसमें इन्वॉल्व होंगे. फर्स्ट इज अनेमिया ड्यू टू इंट्राकॉर्पसुलर डिफेक्ट विच कंसिस्ट ऑफ सिकल सेल अनेमिया एंड थैलेसीमिया. देन टाइप बी में अनेमिया ड्यू टू एक्स्ट्रा कॉर्पसुलर डिफेक्ट, hemolytic disease of newborn, or in case of effect of cytotoxic drugs, in case of effect of venom or poisoning from the substance like lead, or in case of thermal injury or any type of burn and transfusion reaction. Other causes: fluid overload, hypervolemia causes decreased hemoglobin concentration and apparent anemia, and general causes of hypervolemia include excessive sodium or fluid intake, sodium or water retention, and fluid shift into the intravascular space. Then types जो अभी हमने ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड जो उसका मैकेनिज्म जो है कि उनके ऊपर उसके क्लासिफिकेशन के बेसिस के ऊपर अभी जो स्पेसिफिक टाइप्स एनीमिया की आएंगी वो मैं आपसे डिस्कस करूँगी. फर्स्ट इज सिकल सेल एनीमिया, देन मेगालोब्लास्टिक, एप्लास्टिक, हेमोलिटिक, थैलेसीमिया, हेम्स बॉडी एनीमिया, रिफ्रैक्टरी एनीमिया एंड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. First is sickle cell anemia. Sickle cell anemia is a serious inherited disease, and in this the RBC that assume an abnormal rigid sickle shape उनकी होती है, इसलिए इसे sickle cell anemia भी कहते हैं. आप देख सकते हो यहाँ इस पिक्चर में
जो क्रीसेंट शेप जो तुम्हें दिख रही है, दिस सेल्स नोन एज सिकल सेल, और जब ऐसी शेप हो जाती है आरबीसीज की तो उसे हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया. Sickling decreases the cell's flexibility and results in the risk of various complications. The sickling occurs because of a mutation in the hemoglobin gene. Sickle cells contain abnormal hemoglobin called sickle hemoglobin or hemoglobin sickle. Sickle hemoglobin causes the cells to develop a sickle or crescent shape, as I told you. And sickle cells are stiff and sticky उनकी शेप की वजह से, and they tend to block blood flow in the blood vessels of the limbs and organs. Blocked blood flow can cause pain and organ damage, and it can also raise the risk for infection. So आप यहाँ देख सकते हैं ब्लड वेसल हैं और नॉर्मल जो हमारे पास आरबीसीज का जो शेप है वो इजीली ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो हो रहा है, बट इन केस ऑफ दिस सिकल सेल तो ये वहाँ पे स्टक कर जाते हैं. Sign and symptom in the sickle cell anemia. The most common symptom of anemia is fatigue, and the other sign and symptom of anemia include shortness of breath, dizziness, headache, coldness in the hands and the feet, paler than normal skin or mucous membranes, or jaundice. Nursing management. The goal of the treatment is to manage and control the symptom and to limit the number of crises. People with sickle cell disease need ongoing treatment की ज़रूरत है, even when not having a crisis. People with this condition should take folic acid supplement. Folic acid helps to make new red blood cells and blood transfusion, pain medications, or plenty of fluid. Antibiotics, which help to prevent the bacterial infection that are common in the children with sickle cell disease, and medicines that reduce the amount of iron in the body. People with sickle cell disease should have the following vaccinations to lower the risk of infection, and those are Haemophilus influenza vaccine, pneumococcal and pneumococcal polysaccharide vaccine. Next type of anemia is megaloblastic anemia. Megaloblastic anemia जो होता है that is to be characterized by the deficiency of vitamin B12 as well as the deficiency of folic acid, no doubt, and it is a macrocytic anemia. जो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया विच इज़ बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी किया था वहाँ पे मैक्रोसिटिक एनीमिया की क्लासिफिकेशन में ये आता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया. सो एंड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हैव फर्दर टू टाइप्स, pernicious anemia and folate deficiency anemia. So pernicious anemia अगर specific हुआ then that is to be due to the lack of vitamin B12, और अगर folate deficiency anemia है तो that is due to the lack of folates. So इसमें हम वन बाय वन करते हैं. फर्स्ट pernicious anemia decreases in red blood cells that occurs when the body cannot properly absorb vitamin B12 from the GI tract. And vitamin B12 is necessary for the proper development of the red blood cells. तो अगर डाइट में ले रहे हैं बट वो प्रॉपरली ऑब्जर्व नहीं हो पा रहा है फ्रॉम द जीआई ट्रैक या वो डाइट में भी नहीं आ रहा है. So in this type of anemia, RBCs are larger than normal and die earlier than the 120 days life expectancy. And red blood cells can be oval shape. Second type जो इसकी थी that is the folate deficiency anemia. Folate deficiency anemia is a decrease in RBCs due to the lack of folate or lower than normal amount of folic acid in the blood. Folic acid works along with the vitamin B12 and vitamin C to help in the creation of the new proteins and also help to form the red blood cells and the production of the DNA. Folic acid is a type of vitamin B. It was water soluble and which means it cannot to be stored in the body. क्योंकि वाटर सॉल्यूबल जो होते हैं वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते तो हमें कॉन्टिन्यूसली अपनी डाइट में लेना पड़ता है ताकि वो हमारी बॉडी में एक बैलेंस्ड अमाउंट में पर डे के बेसिस के ऊपर हम अपनी बॉडी में उसको कंज्यूम करें. Water soluble vitamins are dissolved in the water. Leftover amount of the vitamins leave the body through the urine. Then causes lack of intrinsic factor and poor absorption of vitamin B12 in the stomach and weakened stomach lining. Digestive disorders अगर हैं जिसकी वजह से vitamin B12 properly absorb नहीं हो पा रहा है. Alcohol abuse, poor dietary intake, intestinal dysfunction, certain medications such as phenytoin, complications of hemolytic anemia. Next are the signs and symptoms: tingling and numbness of hands and feet, and muscle weakness, neurological problem which includes dementia, depression, memory loss, etc.
एंड इन सीवियर केसेस में अगर ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है देन ग्लोसाइटिस, हेडेक, पेलर एंड फॉरगेटफुलनेस, slight jaundice and weight loss. Nursing management. The goal is to identify and treat the cause of the folate deficiency. Folic acid supplements orally or through a vein on the short-term basis until the anemia has been corrected. And dietary treatment and intake of green leafy vegetables and fruits. Replacement therapy in case of poor absorption by the intestine. Next type है हमारे पास aplastic anemia. Aplastic anemia is rare and serious blood disorders in which bone marrow stops making the enough new blood cells, and this is because the bone marrow stem cells are damaged, and the disorder tends to get worse over the time के साथ ही disorder ज़्यादा worse हो सकता है unless its cause is found and treated, and resulting pancytopenia, insufficient number of RBCs, WBCs and platelets. The causes of aplastic anemia: exposure to toxic substances such as arsenic, benzene, cancer therapy, use of certain drugs, and autoimmune disorders, viral infections such as hepatitis, HIV, and damage to the stem cells in bone marrow that are responsible for the blood cell production, and weakened bone marrow. Then sign and symptom: pancytopenia, fatigue and restlessness, and hypoxemia shortness of breath, irregular heartbeat, heart murmur, pale skin, gums and nail beds, and fever, frequent infection due to leukocytopenia अगर वो इसमें है, and increases bleeding tendency and pinpoint red bleeding spot on the skin due to thrombocytopenia, and oral thrush. थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के बारे में इन डिटेल मैंने अपना एक वीडियो लेक्चर डाला है अपने चैनल पे, तो वो वहाँ से सुन सकते हो. देन नर्सिंग मैनेजमेंट, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, और हम यहाँ पे बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी कर सकते हैं, स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांटेशन, और मेडिसिन दे सकते हैं, इराइथ्रोपोइटिन टू स्टिमुलेट्स द बोन मैरो, एंटीबायोटिक एंड एंटीवायरल मेडिसिन टू प्रिवेंट एंड ट्रीट द इन्फेक्शन, अवॉइड एक्सरसाइज, अवॉइड कॉन्टैक्ट इन केस ऑफ स्पोर्ट्स एंड अवॉइड इन्फेक्शंस. नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ, hemolytic anemia. In this case, there is a premature destruction of red blood cells, and antibodies produced by the immune system basically damage these red blood cells, and toxic materials such as lead, copper and benzene are also responsible for this, and hemolytic anemia can be acquired or inherited. Sickle cell disease and the thalassemia are both inherited type of hemolytic anemia, and for this treatment is blood transfusion and avoiding suspect medications which were used in treating related infections, and taking the drugs that suppress the immune system which may be attacking red blood cells. And depending on the severity of anemia, a blood transfusion or plasmapheresis may be necessary, and plasmapheresis is a type of blood filtering procedure in a certain cases which the removal of the spleen can be helpful. नेक्स्ट है हमारे पास थैलेसीमिया. थैलेसीमिया का भी मैंने इन डिटेल जो है वीडियो लेक्चर जो है वो अपने चैनल पे मैंने डाला हुआ है, तो आप वहाँ से इसको सुन सकते हो. सो दिस थैलेसीमिया इज बेसिकली हेमोलिटिक जेनेटिकल डिसऑर्डर है हमारे पास, विच इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफेक्टिव जीन्स की वजह से, एंड देयर इज अ डिफेक्ट इन द जीन्स विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द हीमोग्लोबिन. सो द टू मेजर फॉर्म्स आर थैलेसीमिया माइनर एंड थैलेसीमिया मेजर. As its name implies, thalassemia minor is mild, and those suffering from this condition go on to live a full life. Treatment is often unnecessary. But in case of thalassemia major is also called Cooley's anemia, named after the doctor who first described it in 1925. Thalassemia major can be serious, but it is very rare. Transfusion or bone marrow transplant are usually required. In treatment, blood transfusion, folic acid supplements, removal of the spleen, and bone marrow transplantation. Next is Heinz body anemia. This is a hemolytic anemia resulting from the oxidation of globin and formation of Heinz bodies, which are seen in the blood smears as a dark, refractile intracytoplasmic bodies and stained with the new methylene blue. Some common causes are ingestion of onions and plants in the Brassicaceae family,
and phenazorparidine, methylene blue, and acetaminophen. His body form in the cytoplasm of the RBCs and appears like small dark dots under the microscope. Next is refractory anemia. Any of the various anemic conditions that are not successfully treated by any mean other than the blood transfusion. So वो हम somewhere यहाँ पे इसको relate करते हैं. Then iron deficiency anemia. The body needs iron to produce the hemoglobin necessary for the red blood cells production. In general, most people need just 1 milligram of iron daily for the proper production of the hemoglobin, and menstruating women need double than that dose. Causes for this iron deficiency anemia: insufficient iron supply at birth and impaired iron absorption, blood loss, insufficient iron intake in diet, periods of rapid growth. Symptoms: a hunger for strange substances such as paper, ice or dirt, and upward curvature of the nails referred to as colon cases, and soreness of the mouth with cracks at the corners. So then anemia, just because of chronic lead poisoning or chronic red blood cells destruction and sudden red blood cells destruction. तो इनके स्पेसिफिक सिम्टम्स क्या होंगे वो यहाँ पे इस चार्ट में आप देख सकते हैं. देन नर्सिंग मैनेजमेंट, ओरल आयरन सप्लीमेंट्स हम देंगे एंड फेरस सल्फेट 6 mg per kg 24 hours एंड फॉलिक एसिड 0.4 mg per day, विटामिन B12 100 to 100 mg, IM or subcutaneous 5 to 10 days, and parent education regarding the side effect of iron therapy and the importance of dietary intake of iron. अदर कॉमन सिम्टम्स ऑफ एनीमिया, एक्सट्रीम फटीग एंड द पर्सन में हम उसको देख सकते हैं कि वो उनकी स्किन जो थोड़ी पेल होगी, वीक नज़र आएंगे. देयर इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट पेन, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, हेडेक, डिजीनेस और लाइट हेडेडनेस, cold hands and feet, inflammation or soreness of tongue, brittle nails, fast heartbeat, unusual craving for non-nutritive substances such as ice, dirt and starch, poor appetite, especially in infants and the children with the iron deficiency anemia, and uncomfortable tingling or crawling feelings in your legs. Next is the diagnostic test for anemia. Start with the physical examination. तो हम फिजिकली एग्जामिन करेंगे और उसको कंप्लीट ब्लड काउंट चेक करेंगे, आयरन टेस्ट करेंगे एंड रेटिकुलोसाइट काउंट उसमें हम चेक करेंगे टू सी हाउ वेल ट्रीटमेंट इज वर्किंग. एंड रेटिकुलोसाइट्स आर immature red blood cells produced by the bone marrow and released into the bloodstream. When reticulocytes count increases, it usually means that iron replacement treatment is effective. And a ferritin level test, which reflects how much iron may be stored in the body, and a test to determine the size and shape of your red blood cells to detect जो हमने डिस्कस किया था कि मॉर्फोलॉजी में कोई डिफेक्ट तो नहीं है जिसकी वजह से एनीमिया कॉज हो रहा है, तो वो चीज़ यहाँ से कंफर्म हो जाती है. एंड सम ऑफ द रेड ब्लड सेल्स में ऑल्सो बी एग्जामिन्ड फॉर अनयूजुअल साइज, शेप एंड कलर. देन मैनेजमेंट फॉर अनेमिया, it depend upon anemia management is totally depend upon the cause and the severity. एंड उसके बाद हम उसमें आयरन सप्लीमेंट्स देंगे, प्रॉपर उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़े तो हॉस्पिटलाइज करेंगे पर्सन को और ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं. मेडिकेशन में आयरन, विटामिन सप्लीमेंट्स, इराइथ्रोपोइटिन इंजेक्शंस एंड स्टॉपिंग ए मेडिकेशन दैट मे बी द कॉज ऑफ द अनेमिया. And in case of iron deficiency anemia, this form of anemia is treated with the changes in the diet and the iron supplements. And if the underlying cause of iron deficiency is loss of blood other than from menstruation, the source of the bleeding must be located and stopped. This may involve surgery. And oral iron therapy हम इसमें दे सकते हैं. An increase in hemoglobin of 1 gram per dl after 1 month of treatment shows an adequate response to treatment and confirm the diagnosis. And in adults, therapy should be continued for 3 months at least, and after that the anemia is corrected to allow the iron stores to become replenished. यूजुअल पीडियाट्रिक डोज फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, प्रीमेच्योर न्यूनेट का डोज दिया है, इन्फेंट एंड चिल्ड्रन लेस देन 12 ईयर्स, माइल्ड टू मॉडरेट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के केस में एंड सीवियर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के केस में. So these are the specific doses for the iron deficiency anemia.
Then side effect of oral iron therapy. Adherence to oral iron therapy can be a barrier to treatment because of gastrointestinal adverse effects such as epigastric discomfort, nausea, diarrhea, and constipation. These effects may be reduced when iron is taken with meals, but absorption may decrease by 40%. Medications such as proton pump inhibitors and factors that induce gastric acid hyposecretion are associated with the reduced absorption of dietary iron and iron tablets. So the side effects are dose dependent and the dose may be adjusted. Foods and drugs that impair iron absorption. Taking oral iron with food reduces absorption. Caffeinated beverages होते हैं, कैल्शियम कंटेनिंग कोई फूड है या कैल्शियम सप्लीमेंट के साथ अगर हम लेंगे आयरन को तो उसका भी अब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा. एंटासिड हैं, H2 हीट रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स. Then factors that affect the absorption of iron supplement. There are some factors which somewhere affect the absorption of iron. So the amount of iron absorbed decreases as the doses get larger. For this reason, it is recommended that most people take their prescribed daily iron supplement in 2 or 3 equally spaced doses. Oral iron supplements must dissolve rapidly in the stomach so that the iron can be absorbed in the duodenum or upper jejunum. Enteric coated preparations and long-acting supplements may be ineffective since they do not dissolve in the stomach. Ascorbic acid is an enhancer of iron absorption and can reverse the inhibiting effects of substances such as tea and calcium. Ascorbic acid facilitates the iron absorption by forming a chelate with a ferric iron at acid pH that remains soluble at the alkaline pH of the duodenum. To minimize the side effect, iron supplements are often taken with food and this may decrease iron absorption by as much as 40 to 66%. Food and drug interactions may reduce the efficacy of oral iron. Next is the ways to minimize adverse effects of oral iron. So there are number of ways जो कहीं ना कहीं minimize कर सकते हैं जिनके थ्रू हम जो adverse effect है oral iron के. So start with the half the recommended dose and gradually increase to the full dose. जो भी dose आपको recommend की गई है उसको पहले half से start करेंगे then धीरे धीरे full पे जाएंगे. Take iron supplements with food to alleviate gastrointestinal distress and this may decrease iron absorption by as much as 40 to 60%. Change to a different iron preparation and take the supplement in divided doses and concomitant use of a stool softener such as docusate may help to alleviate the constipation. Then parenteral iron therapy. Parenteral therapy may be used in the patient who cannot tolerate or absorb oral preparations such as those who have undergo gastrectomy, gastrojejunostomy or bariatric surgery or other small bowel surgeries. The most common indications for intravenous therapy include GI effects, worsening the symptoms of inflammatory bowel disease and unresolved bleeding, renal failure, induced anemia, treated with erythropoietin and insufficient absorption in patient with the celiac disease. Next is the prevention. हम anemia को होने से कैसे prevent कर सकते हैं? Very simple, we have to take a diet which is very much rich in the iron, folic acid, vitamins. So choose a vitamin rich diet. Many types of anemia can't be prevented. However, you can help to avoid the iron deficiency anemia and vitamin deficiency anemias by choosing a diet that includes a variety of vitamins and nutrients. इंक्लूडिंग, ठीक है. सो अगर उस टाइप के एनीमिया है जो हमें किसी चीज़ की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है, जैसे पर्निशियस एनीमिया हमारे पास था, फॉलेट डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो वो चीज़ों को हम यहाँ पे कवर अप कर सकते हैं. आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, रादर देन कोई मॉर्फोलॉजिकल डिफेक्ट है या कुछ मैकेनिज्म उनका वेरी कर चुका है, उसकी वजह से कुछ हो रहा है, तो उसको तो हम प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे, उसको तो हमें राइट कॉज और फिर ट्रीटमेंट प्रॉपरली देना पड़ेगा. बट कुछ जो डाइट में इनसफिशिएंट अमाउंट के इनटेक की वजह से अगर हो रहा है तो उसे हम प्रिवेंट ज़रूर कर सकते हैं. So for that we have to take the iron rich food which include the beef and other meats, beans, lentils, iron fortified cereals, dark green leafy vegetables and dried fruits.
folate. This nutrient and its synthetic form, folic acid, can be found in the citrus fruits and juices, bananas, dark green leafy vegetables, legumes, and fortified bread, cereals, and pasta. Vitamin B12, this vitamin is found naturally in the meat and dairy products. It's also added to some cereals and soya products such as soya milk. And vitamin C. Then nursing diagnosis. First is activity intolerance related to the weakness, fatigue, and general malaise, and altered nutritional level less than the body requirement related to the inadequate intake of essential nutrients, and ineffective tissue perfusion related to the inadequate blood volume, and ineffective family coping related to the disabling and life-threatening disease. So nursing care plan for anemia. For first, that is the risk for infection related to the decreased immunity and invasive procedures. So the goal is to reduce the risk factor for the infection, and for that we have to control from the infection and clean up the environment after use for other patients, limit visitors, and hand washing appropriately, and antimicrobial soaps का use करेंगे, and before and after nursing actions. Use clothes and gloves, aseptic environment, increase the intake of nutrients and adequate fluid, and give the antibiotics according to the program. Then protection of infection, monitor sign and symptom of systemic and local infection, monitor susceptibility to the infection, and maintain aseptic technique for each action, and inspection of the skin and mucous membrane redness. Monitor changes in energy level of the patient and encourage the client to improve the mobility and exercise, and instruct the client to take the antibiotic according to the program. And we have to teach the family and the client about the sign and symptom of the infection and report suspected infection. Next is activity intolerance related to tissue hypoxia or associated with the anemia, resulting from decreased production of RBCs, resulting from a decreased intake and absorption of vitamins and minerals, and an inability of the liver to store vitamins and minerals. So in that we have to assess for the sign and symptom of activity intolerance. कितना है patient का, fatigue and weakness को assess करना है, exertional dyspnea and chest pain, diaphoresis and dizziness, abnormal heart rate response to the activity, and we have to check for that. For example, there is an increase in the heart rate of 20 beats per minute above resting rate. So rate not returning to the pre-activity level within 3 minutes after stopping activity, change from the regular to irregular rate, and a significant change 15-20 mm of Hg in blood pressure with the activity. तो वो सब चीज़ें हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है. Implement measures to improve the activity intolerance. Perform action to promote the rest or to conserve the energy. Patient की energy को हमें conserve करना है. थोड़ा थोड़ा activity के लिए उसको encourage करेंगे. Maintain the activity restriction as ordered and minimize the environmental activity and noise, and organize the nursing care to allow for periods of uninterrupted rest, and limit the number of visitors and their length of stay, and assist the client with the self-care activities as needed. Keep supplies and the personal articles within easy reach ताकि patient अपने आप से ले सके, and instruct the client in energy saving techniques के बारे में हम उसको बताएंगे, and implement measures to reduce fear and anxiety. Implement measures to promote the sleep. सो हम उसको जितना हो सके प्रॉपर वो स्लीप ले सके, एंड उसको कुछ डिस्कम्फर्ट ना हो तो वो हम रिड्यूस करेंगे, एंड उसको डिस्करेज करेंगे फॉर स्मोकिंग एंड एक्सेसिव इनटेक ऑफ बेवरेजेस विच इज़ हाई इन कैफीन सच एज कॉफ़ी और टी का इनटेक अगर पेशेंट करता है तो उसके लिए भी हम उसको मना करेंगे. एंड परफॉर्म एक्शंस टू इम्प्रूव द ब्रीदिंग पैटर्न इन ऑर्डर टू डिक्रीज द डिस्निया एंड इम्प्रूव द टिश्यू ऑक्सीजनेशन, एंड मेंटेन द ऑक्सीजन थेरेपी एज ऑर्डर्ड, और उसका न्यूट्रिशन स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करेंगे, और परफॉर्म द एक्शन टू ट्रीट द अनीमिया. फॉर दैट वी हैव टू एडमिनिस्टर द प्रिस्क्राइब्ड आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, तो वो हम उसको देंगे. एंड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू रिपोर्ट अ डिक्रीज टॉलरेंस फॉर एक्टिविटी एंड स्टॉप एनी एक्टिविटी दैट कॉजेज चेस्ट पेन, अ मार्क्ड इंक्रीज इन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, dizziness or extreme fatigue or weakness. Consult the physician if sign and symptom of the activity intolerance persist or worsen. अगर पेशेंट को लगता है कि वो कुछ काम कर रहा है जिसकी वजह से वो चेस्ट पेन हो रहा है, या उसको जो है वो डिजीनेस हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, या वो थकावट महसूस कर रहे हैं, तो उस चीज़ के रिगार्डिंग अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म कर सकता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई टूडेज टॉपिक अनेमिया.
सो इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की, इसकी क्लासिफिकेशन, इसकी टियोलॉजी, बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी क्या इसकी क्लासिफिकेशन थी, एंड बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म क्या था, स्पेसिफिक इसमें टाइप्स कौन कौन थे हमारे पास एनीमिया के, सिकल सेल एनीमिया हमारे पास है, ब्लास्टिक एनीमिया, हेमोलिटिक एनीमिया, थैलेसीमिया। तो ये सब चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की। दैन डायग्नोस कैसे करेंगे, उसको मैनेज कैसे करेंगे, प्रिवेंट अलॉन्ग विद द नर्सिंग मैनेजमेंट। सो आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, और ऐसे ही और वीडियो लेक्चर सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एस एस पीडियाट्रिक्स, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू।